Assalamu alaikum students. So today we're going to study about the plant organs from our chapter of cell tissue and organs. And before we start this chapter, मैं रिवाइज करती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है. So हमने cells के बारे में पढ़ा है. We know they're tiny units that build up, right? And हमने फिर पढ़ा है कि cells के दो किस्म होते हैं, animal cells और plant cells. और फिर हमने animal cell और plant cell के फ़र्क भी देखे थे. एंड फिर हमने पढ़ा कि स्पेशलाइज सेल्स एंड टिश्यूज भी होते हैं जिसमें पैलिसेड सेल्स आ गए और रूट हेयर सेल्स आ गए जो प्लांट सेल्स के एग्जांपल्स हैं. एंड फिर हमने रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ा जो स्पेशलाइज प्लांट सेल्स हैं. और फिर हमने ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा. एंड वी स्टडीड कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम. एंड ये अब हमारा ह्यूमन के बारे में ख़त्म हो गया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. And please do make a title page with the plants and write the day and the date on your page. And let's begin. So, plant organs. The main plant organs are the flower, which contains the plant's reproductive organs. So, ये आपको बता रहे हैं कि plant में जो main part होता है वो flower होता है और उसमें उसके reproductive parts होते हैं, right? And then फिर ये आपको बता रहे हैं कि plant के दूसरे parts जो होते हैं वो होते हैं the stem, the leaves and the roots. फिर कह रहे हैं with a typical land plant growing in soil. The root system is everything growing below the plant, below the ground, and the shoot system is everything above the soil. तो मैं आपको pictures दिखाकर explain करती हूँ. ये आपको कह रहे हैं कि that's growing everything that's growing below the ground is the root system. तो ये सब कुछ जो भी आप देख रहे हैं ये root system हो गया, right? और इसके ऊपर से जो भी सब कुछ निकल रहा है that's the shoot system, right? तो आप shoot से याद रख सकते हैं कि it's going up और root से आप याद रख सकते हैं कि वो नीचे वाला होगा. And up now we're going to read about the flower. So the flower contains the plant's reproductive organs. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था and this is really important to remember. तो flower जो है वो एक plant का हिस्सा होता है as you can see over here. और इसमें reproductive organs होते हैं, right? तो जैसे बहुत plants बन सकें it needs to have a flower, right? फिर आगे कह रहे हैं many flowers attract insects which carry pollen between plants to bring about pollination and fertilization. तो यहाँ पर भी this is important कि जो flower है वो ज़रूरी है क्योंकि इसमें reproductive parts होते हैं. और how does ये plant का reproductive system चलता कैसे? They need insects, right? जैसे bees हो गए and house flies. तो these insects वो एक plant पर जाते हैं और उनका pollen लेते हैं and फिर दूसरे प्लांट पर जाते हैं और वहां पर वो पोलन लैंड होता है, राइट? तो वो पॉलिनेशन हो गया. और फिर जब वो एक प्लांट का पोलन दूसरे पोलन से मिलकर फर्टिलाइज होता है तो वो फर्टिलाइजेशन हो गया. सो फ्लावर्स में रिप्रोडक्टिव के दो सिस्टम्स हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. पहले पॉलिनेशन आता है फिर फर्टिलाइजेशन आता है. अब उसके बाद वी आर रीडिंग अबाउट द स्टेम. So the stem usually grows upward towards the light. It carries water and mineral salts to the leaves and food around the plant. तो ये जो straight long branch निकलती है soil से, that's called the stem, right? It's the ये सीधी होती है, right? और इसमें पूरे water minerals होते हैं और stem के through आपकी जो side पर leaves होते हैं और flowers होते हैं, branches होती हैं, उनको water minerals मिलते हैं, right? And then we're reading about the leaves. So the leaves are the organs for photosynthesis. They make all the food for the plant. The leaves contain chlorophyll, which uses light to change carbon dioxide and water into the sugar glucose. Leaves have tiny pores on their undersides. These let essential carbon dioxide in and waste oxygen and water out. तो ये भी बहुत important part है. ये आपको बता रहे हैं ये जो leaves हैं they are really important because ये आपके plant का food बनाते हैं और जो food बनाने का process होता है पूरा उसका नाम है photosynthesis, right? और ये कैसे बनता है? It's because जो leaves हैं उनके पास एक chlorophyll molecule होता है और वो light रोशनी को इस्तेमाल करता है and ये plants जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं उसको इस्तेमाल करता है एंड वाटर को. और फिर वाटर जो आपके रूट्स ज़मीन से ले रहे हैं
उसको इस्तेमाल करता है क्लोरोफिल लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर प्लांट के लिए शुगर ग्लूकोज बनाता है। और ये बता रहे हैं कि प्लांट्स लीव्स की जो नीचे वाली साइड है वहां पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। और ये असेंशियल है बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन पोर्स के थ्रू जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के विच आर ऑक्सीजन एंड वाटर वो निकालता है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रूट्स के बारे में। सो रूट्स ये वाले हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड ये बता रहे हैं कि द रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे और फॉल ओवर बाय एक्सीडेंट। तो कभी कभी बहुत तेज हवा होती है, तूफान आते हैं, तो जैसे प्लांट्स अपनी मिट्टी से निकल ना जाए, ये रूट्स अपनी जगह पर एक जगह पर रखते हैं, राइट, जैसे बहुत स्ट्रांगली। तो ये आपको यही बता रहे हैं, एंकर का मतलब एक जगह पर रखना। द रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल सो दैट इट डज नॉट ब्लो अवे or fall over by accident. The root hairs provide a large surface area to take in water and mineral salts from the soil. तो ये जो रूट्स हैं ये इतने सारे होते हैं कि लार्ज जो सरफेस एरिया होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो वाटर और जो भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं मिट्टी में वो आसानी से प्लांट के अंदर जा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्लांट्स। और फिर आपको अपना डायग्राम बनाना होगा ये प्लांट का एंड यू विल लेबल द पार्ट्स। तो आप प्लांट बनाएंगे एंड आप दिखाएंगे सॉइल के अंदर रूट्स हैं और ये रूट सिस्टम है, और आप सॉइल के ऊपर दिखाएंगे कि ये स्टेम है, लीव्स है, प्लांट है और ये शूट सिस्टम है, राइट। एंड नाउ वी विल मूव टू योर होमवर्क एंड we'll go through the hard words. Okay, students, so for your hard words, please do make a title page if you haven't already, and do write the day and date on the page. And for your hard words, we have underlined these words, and you're supposed to write them 5 or 6 times. So the first word is reproductive, then the second word is stem, and stem is the vertical growing part of the plant that's above the soil, right? And then the third word is pollination, which is when pollen from one plant is brought by the insect to the pollen of the other plant. And the fourth word is fertilization. And pollination and fertilization, जैसे हमको पता है ये flower में होता है, which contains the main reproductive part of the plant. And then your other word is photosynthesis, which is the process of making food for the plants. And then the other word is glucose, which is basically the name of the sugar जो आपका plant बनाता है to have its own food, right? And then your other word is undersides, which means नीचे. And your other word is essential, which means ज़रूरी. उसके बाद your last words are anchor, which means बहुत सख्ती से खड़ा होना, right? ये plants के लिए है. And then your other word is blown away or blow away. And then your other word is fall over. And your last word is mineral salts. So those are your hard words. And your other exercise is drawing this diagram of the plant and labeling the parts of the plant, right? And now we'll move on to your other exercise. Okay, students, so now we're going to move to your third homework. Your first homework was underlining the hard words and writing them down. Your second homework was drawing the flower or the plant diagram and labeling the parts. Please do make a title page before doing any of these exercises. And your third exercise is question and answers. So do write question and answers below exercise number 3. So your first question is, what contains the main reproductive parts of the plant? So we know that flower जो है that contains the reproductive part of the plant. So the answer is flower contains the main reproductive part of the plant. Your second question is, how many parts does a plant have? So we know कि soil के अंदर जो part होता है जो roots वाला होता है that's called the root system, और soil के ऊपर जो part है that's called the shoot system, right? And the answer to this question is, a plant has roots that are in the soil to anchor the plant. And जैसे आपको पता है roots का main function जो है it's to anchor the plant and to make sure कि जो आपका plant है वो हवा के झोंके से या ठंडी से या जो भी क्लाइमेट का होता है जैसे बहुत तेज बारिश तूफान उससे आपका प्लांट मिट्टी से उखड़ ना जाए, राइट? तो ये रूट्स का मेन फंक्शन है।
एंड दूसरे पार्ट्स जो हैं वो स्टेम लीव्स और फ्लावर हैं और स्टेम लीव्स और फ्लावर जैसा आपको पता है वो शूट सिस्टम में इंक्लूडेड है राइट एंड देन योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सो एंड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो आखिर में क्या बन रहा है क्या मिल रहा है so the answer is the end products of photosynthesis are oxygen water and glucose और जैसे आपको मालूम है ऑक्सीजन एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं ऑक्सीजन इज गिवन आउट और वो हम फिर इनहेल करते हैं राइट और वाटर भी जो है दैट्स गिवन आउट और ग्लूकोज जो है प्लांट्स यूज इट फॉर देमसेल्व्स राइट एंड देन योर लास्ट क्वेश्चन इज what are the main products used by plants for photosynthesis? So when they're asking you main products used by plants, तो इसका मतलब है before photosynthesis हो रहा है तो what are the plants using? तो इसमें आप waste products नहीं लिखेंगे, end products के बारे में नहीं बताएंगे. So oxygen, water and glucose के बारे में नहीं बताएंगे. And the answer for this question is plants contain chlorophyll and use carbon dioxide and sunlight to make their own food. तो plants के पास उनके लीव्स में ये important है याद रखना कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है एंड जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड राइट सो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 3 and now we'll move on to the next exercise. Hey students, so your fourth exercise is true or false. And the first question is everything growing below the soil is called shoot system. The answer is false. This is because everything growing below the soil, just everything जो भी soil के नीचे grow हो रहा है, which is roots, it's not called the shoot system, it's called the root system, जैसे उसका नाम है. So इसलिए ये पहला वाला is false. And then your second true or false is leaves are the main reproductive parts of the plants, which is also false because flowers are the main reproductive parts of the plants. And then your third true or false is roots are required to make sure that the plant is blown away. And the answer to that is false. क्योंकि roots are required to make sure कि जो plant है वो मिट्टी में anchored हो right blow away ना हो and your last true and false is leaves are required for photosynthesis which is true जो leaves होते हैं they have very tiny pores उनके leaves के नीचे और वहाँ से the leaves they take in carbon dioxide and they trap in sunlight और फिर यहाँ पर photosynthesis होता है and oxygen and water which are the waste products are excreted out और जो glucose होता है that's used up by the plant. So this is your homework for the plant chapter and I hope you all enjoyed studying with me. Please do your homework well, read the chapter through with me, do all your homework and I'll see you in the next class. Allah Hafiz.